So in object-oriented programming, these are the key concepts: class and object, encapsulation, inheritance, polymorphism, and abstraction. So we create class using class keyword followed by class name. Inside class, the constructor in Python we define using init method like this: def underscore underscore init underscore underscore. Whatever attributes you want to initialize inside the constructor, we give them like this. And along with constructor, you can define your own methods, right? Now, once the class is created, you can create object using um, object name like person1 is equal to class name. In bracket you can specify the parameters like here we want name and age, so while creating object I have specified here Alice and 30, and then you can call methods defined inside that class using the object. Okay, so this is about class and object. Then the next is encapsulation. So encapsulation is nothing but the wrapping up attributes and methods inside the class. So here we can create private attributes, right? So private attributes in Python are specified just using double underscore. Okay, so when you give double underscore in front of uh, any attribute, it becomes private. Okay, so here we have made this name and age as private attributes. Okay, then next is inheritance. So we can create subclasses in Python. So how to create subclasses? You can see here we have a parent class animal. Okay, so this is the regular class. Now I want a dog class which is inherited from animal. So how to define it? Class dog and in animal. So this bracket in bracket animal specifies that dog is inherited from animal. Okay, just a second. Just like dog, we have created one more child class, that is cat, which is again inherited from animal, and we have overridden this speak method inside each subclass. Like in dog, we have speak method which will return some different message. In cat also we have speak method which is overridden, and here also we are returning some different message. So the code or the statements written inside the speak methods are different, that is we are overriding the name is same but implementation is different. Okay, now how to create objects of subclasses? It is similar. So dog is the object name is equal to class name in bracket parameter. Okay, so we are specifying the name, and then we can call speak method on that particular object like dog.speak, cat.speak. Okay, the next concept is polymorphism. So polymorphism allows us to create object of different classes to be treated as object of common superclass. Okay, so for that the example, see here we have a class bird, class fish. In both the classes we have speak method. Okay, now here how we have used polymorphism. See here we have created a list, right? And then we are inside that list only we are creating object of bird and fish. Okay,
And then common method we are calling here animal dot speak, okay, in for loop. So one by one it will take the object, because this is the list, we are iterating over this list using for loop, okay, and every item is taken into the animal object, okay, and then we are calling this animal dot speak. So as per the according to your class name, it will give you the output. Like first it will call speak on dog, so it will give bark, right? In previous example we have extended in polymorphism. So for dog we have woof. So when you will call speak method on dog, it will return you woof. Then second time it will call speak method on cat, it will give you some different message. When you call it on bird, it will give you chirp, and if you call it on fish, it will give you blub, right? So same speak method is used on various classes in various ways. This is called as polymorphism. And then we have seen the concept of abstraction. So abstraction is the concept of hiding the complex implementation details and showing only the essential feature of an object. So for abstraction, we have to import this module ABC. ABC means abstract base classes. Here you can see. Abstraction can be achieved using abstract base classes, that is ABC in Python. So the ABC module provide infrastructure for defining abstract base classes. So if you want to define any abstract class, so first you have to import the module, import ABC module. Okay, from ABC import this ABC. ABC means abstract base classes, right? And abstract method, because when you will define abstract method, you have to decorate that method using this decorator. Okay, so you can see here, before defining method we have written at the rate abstract method. So what is this? This is the decorator, and this abstract method decorator will specify that the sound method is abstract method. Okay, so here we have defined a abstract base class. So how we define abstract base class? If method inside the class is abstract, that class becomes abstract. Okay, so class animal, and we have inherited that from ABC. Okay, so this ABC module, and inside that abstract class we have abstract method, which is sound, and this pass means we don't want to write anything, because you might know in abstract, when we define an abstract method, it does not have any implementation, right? That method will be overridden in the child classes, and where there we will define its implementation, right? We have one normal method here in animal, that is sleep. Okay, now in derived classes you can see here we have first derived class, that is dog, okay, which is derived from animal. Now here in child class it is mandatory that you have to define this sound method. Okay, तो यहाँ पे हमने sound method define किया. Again this cat is derived from animal. Inside this cat again we have defined this sound method. Okay, क्योंकि ये साउंड मेथड एब्स्ट्रैक्ट है, जब हम डिराइव करेंगे तो वहाँ पे उसका इम्प्लीमेंटेशन हमें देना पड़ेगा, राइट? एंड हाउ वी आर यूजिंग दिस एब्स्ट्रैक्शन हियर? So we have this normal method which is outside the class called make sound. Okay, and make sound is taking one parameter. So whenever we'll pass any parameter, any object of animal class, may it be the base class or the child class, and when we'll call sound method on it, it will give respective message. So if your object is of dog type, it will give you bark message. If your object is of cat type, it will give you meow message, right? This is the example of abstraction. Okay, so you just have to create instances of dog and cat, and to make sound method, you will, if you pass dog, it will give you this output. If you pass cat, it will give you this output. Okay, and the sleep method we have not overridden, but it is from the parent class. So if you call sleep, you will get this output. Okay, on dog as well as on cat.
Any doubt in abstraction? Yes. No, ma'am. Okay. So we'll see some more concepts in Python and then I'll show you its implementation. Okay, so we have uh, completed this abstraction. Then next topic is static methods. Okay, so what are static methods? Static methods are the methods that belong to the class rather than instance of the class. So normally when we define any method inside class, we have to call that method by creating its object, right? But when you define any static method inside the class, that static method we have to call using class name and not using object name. Okay, so they do not require access to the instance, that is self or class itself. Static methods are defined using स्टैटिक मेथड डेकोरेटर. जैसे हमने एब्स्ट्रैक्ट मेथड के लिए डेकोरेटर देखा था, वैसे ही स्टैटिक मेथड अगर आपको डिफाइन करना है तो यू हैव टू राइट दिस स्टैटिक मेथड डेकोरेटर. Okay, and are used for utility functions that perform task in isolation. So if you want some method in your class, um, which is which you don't want to, which the method which you don't want to call by creating the object, but the method which will work in isolation, you can create a static method. Okay, so when a method does not need access or modify instance or class state, then we can define a static method. Okay, so this is the syntax. Inside class you have to write decorator, that is at the rate static method, and then you can define your method. So here this add method is static method. Got it? ओके, वी विल सी इट्स इम्प्लीमेंटेशन. अभी के लिए सिर्फ कॉन्सेप्ट समझ लो स्टैटिक मेथड का. Then next, we are going to see bound methods and unbound methods. Okay, so first we'll see bound methods. So bound method is a method that is associated with instance of class. जो usually हम class में जो भी methods define करते हैं, those are bound methods, right? जैसे यहाँ पे एक class है my class. Inside that class we have a method called greet. So this greet is the bound method. Okay, and every bound method will have self as its first argument. Okay, so this first argument is self. And how to use that method? By creating the object. First you have to create object of the class and then object name dot that method name. Okay, so usually whatever method we define inside class, those are the bound methods, those are called as bound methods. Now let us understand the unbound methods. Okay, so see, unbound methods are the methods that is called on the class itself rather than on an instance. Okay, so here you can see how we have used that unbound methods. Okay, so in Python 3 methods defined in a class are actually functions, and when called on the class they do not receive the instance automatically. Okay, so previously in Python, जैसे अभी हम सेल्फ लिखते हैं तो ऑटोमेटिकली मेथड कॉल हो जाती है क्लास की, तो पहले वैसे नहीं था. सो व्हाट वी हैव टू डू इन दैट केस, एक तो हमने एक क्लास डिफाइन किया, उसके अंदर एक मेथड डिफाइन किया ग्रीट. नाउ फर्स्ट वी हैव टू क्रिएट instance of the class like this, my instance is equal to my class, and then you have to call that method on the instance. So how will you call? My class dot greet, and in bracket you have to give the instance. These are called as unbound methods. Okay, so usually we don't use unbound methods. Okay, but sometimes if dynamically you want to pass any instance to the method, then we can use, but usually we use bound methods. Okay, so if you see the output will be same. The way we are using the method is only the difference. Got it? Bound and unbound methods. Yes, ma'am. Okay.
next topic we are going to see is operator overloading. Okay, so in operator overloading, we have some predefined operators and we want those operators to behave in a different way. We want to change behavior of the predefined operator. Okay, so that is called as operator overloading. So in Python, it allows you to define or change behavior of operators for user defined classes. So you can define how operators like plus, minus, star, slash and others work with instances of your classes. Means you can overload the operator inside your own class. जैसे plus usually हम use करते हैं for adding two numbers. So same plus आपको use करना है for uh, for adding marks of the student class. So you can overload that operator and you can write some code inside it which will add marks of the student. Okay, same plus method if you want to same plus method if you want to use for some other sort of work you can use. Okay, so for that you have to overload that operator. So here in Python, it provides you a special methods called as magic methods or dunder methods. Okay, because they have double underscores before and after their names. जैसे init method था वैसे ही अगर आपको ऑपरेटर ओवरलोड करने हैं तो फॉर दैट यू हैव टू यूज मैजिक मेथड्स. ओके, सो मैजिक मेथड्स आर द मेथड्स in front of which we have double score and double score after their name. Okay, now let us see one example of operator overloading. So here you can see if you want to overload plus operator, so for that the magic method is add. So you can see here how we have written the add. Here double underscore, then add, again double underscore. This is called as magic method. Okay, and now what this magic method is doing, see here we have a class point in which x and y are the parameters for this init. Okay, and now using add what we are going to do, we are going to add the coordinates. Okay, जैसे समझ लो कि ये x and y पॉइंट के कोऑर्डिनेट है. बाय डिफॉल्ट ऐड दो नंबर्स को ऐड करता है लेकिन यहाँ पे हमें कोऑर्डिनेट्स को ऐड करना है. मतलब एक्स वाई आपको एक पॉइंट दिया है और एक्स वन वाई वन दूसरा पॉइंट दिया है. ठीक है, P1 एंड P2. तो अगर आप P1 प्लस P2 करोगे तो x प्लस x होगा, सॉरी x प्लस x1 होगा, y प्लस y1 होगा. लाइक दैट वी हैव टू डू. So for this add we are giving some other point as a parameter and इसमें हम क्या करेंगे, self dot x plus other dot x and self dot y plus other dot y. So we are changing the default behavior of add method. Okay, वैसे ही string str method है. This is also magic method for str. So by default this str method prints the value, right, whatever we pass. Now here we want to customize that str to give some formatted output. जैसे हमें ब्रैकेट में x comma y चाहिए तो we are customizing this str to in bracket self dot x comma self dot y. तो ये राउंड ब्रैकेट में x comma y के फॉर्मेट में प्रिंट करेगा. ठीक है, तो ये हमने डिफॉल्ट स्ट्रिंग का बिहेवियर इसमें चेंज किया है. दिस इज कॉल्ड एज ऑपरेटर ओवरलोडिंग. सो हियर इफ यू क्रिएट टू ऑब्जेक्ट्स ऑफ पॉइंट जैसे पॉइंट 1,2 and P2 is equal to 0.3,4 and if you do P3 is equal to P1 plus P2. तो ये क्या करेगा, जैसे हमने ऐड में लिखा है सेल्फ डॉट एक्स प्लस अदर डॉट एक्स, तो वो क्या करेगा 1 प्लस 3 एंड 2 प्लस 4. तो आपको आउटपुट मिलेगा 4,6. ठीक है, और हमने प्रिंट P3 किया है सिर्फ. तो P3 ऐसे ब्रैकेट में कॉमा लगा के क्यों आ रहा है, बिकॉज हमने उसको ओवरलोड किया है, str को ओवरलोड किया है. तो बाय डिफॉल्ट जब भी आप प्रिंट में कोई भी पॉइंट दोगे तो वो ऐसे ही प्रिंट होगा, राइट. So this is about operator overloading. Okay, now we will practice these things so it will be more clear to you.
So first we will see program for abstraction. Okay, in previous class we have seen example of inheritance, right? Where we have one vehicle class which is parent class, and from vehicle we have derived car and motorcycle. Now we'll see the demonstration of abstraction. Okay, मैम स्क्रीन नहीं दिख रही। just a second. Now, जी मैम, अब विजिबल है। okay. So we'll see example of abstraction. तो जैसे मैंने आपको बताया, सबसे पहले abstraction के लिए हमें abstract class बनाना है, तो क्या import करना पड़ेगा? ABC module. So you have to write from ABC import ABC, okay, and abstract method. ये दोनों आपको import करने हैं. Then only you will be able to create abstract class. Okay. Then define abstract base class. Okay, we'll first define abstract base class. So again हम animal class define करते हैं. Class animal which is derived from ABC. Okay, which is abstract base class. Now inside this we have to define a method which is abstract. So for defining abstract method you have to use this abstract method decorator @abstract method, and immediately after that define your method. So define sound cell, and we will not give any definition for this. So for that I'll just write pass. Okay, तो किसी भी लूप में, किसी भी फंक्शन में, किसी भी मेथड में अगर आपको कुछ भी नहीं देना है, एक भी सेंटेंस नहीं देना है, तो you can just write pass. Okay, so here we have defined this sound method with no implementation or no statements in it. One more method we will define here, that is sleep, and इसके अंदर हम फिर से देंगे self, और sleep के अंदर हमें सिर्फ एक मैसेज प्रिंट करना है, the anim this animal is sleeping. Okay, ये हो गया abstract class. Now we will define a derived class. So ये जो class है dog, वो derived है from animal. Okay, इसमें हम क्या करेंगे, जो sound method है वो override करेंगे. So def sorry def sound, ठीक है, और रिटर्न क्या करना है हमें यहाँ से, just wait for a second. हेलो, हाँ, दो, हाँ, नहीं करे करू लेक्चर में कुछ, हाँ तो क्या चेंज करे रहे क्यों ना, लैपटॉप में चार्जिंग नहीं है, भेजो, हाँ मैं यहाँ पे भेजो, हाँ. Okay, sorry for the interruption. Now here in dog, am I audible? यस मैम। Okay. So in dog class, we are redefining or overriding this sound method. So here we will return bark. ठीक है, या फिर हम कर देते हैं प्रिंट, यहाँ से प्रिंट कर देंगे बार.
एंड नो नीड टू डिफाइन द स्लीप मेथड। अगर आपको रीडिफाइन करना है तो आप कर सकते हो, लेकिन यहाँ पे हम डिफाइन नहीं कर रहे हैं, तो इट इज नॉट नेसेसरी, बट द साउंड मेथड overriding is necessary because it is abstract method. So in derived class you should give its definition. So just like the dog, we can create one more class, cat, which is again derived from animal. Again here we have to define this sound method, sorry, and here we'll write print. ओके, समझ में आया एब्स्ट्रैक्ट क्लास कैसे डिफाइन करना है, एब्स्ट्रैक्ट मेथड कैसे डिफाइन करनी है, और वो उनको ओवरराइड कैसे करना है। ठीक है, अभी हम एक नॉर्मल मेथड डिफाइन करेंगे। तो ये आप समझ लो कि ये जो मेथड मैं अभी डिफाइन कर रही हूँ ये कोई भी क्लास के अंदर नहीं है। ठीक है, इंडेंटेशन मैंने निकाल दिया है, तो ये क्लास के बाहर मेथड है मेक साउंड, और इसको हमें देना है एक एनिमल का ऑब्जेक्ट। ओके, और ये मेथड क्या करेगी, जो भी आप एनिमल इसको पास करोगे उसके साउंड मेथड को ये कॉल करेगा। ठीक है, ये फंक्शन क्या करेगा, कोई भी एनिमल आप इसको पास करो वो इसके साउंड मेथड को कॉल करेगा। ठीक है, नाउ विल सी हाउ इट वर्क्स। तो सबसे पहले हम तो डॉग का ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे। वन मोर थिंग, यहाँ पे जो एनिमल क्लास है वो एब्स्ट्रैक्ट क्लास है, तो एब्स्ट्रैक्ट क्लास का आप ऑब्जेक्ट नहीं बना सकते, राइट। तो यहाँ पे हम पहले तो डॉग का ऑब्जेक्ट बनाएंगे, फिर हम एक कैट का ऑब्जेक्ट बनाएंगे, और अभी क्या करेंगे, ये जो मेक साउंड वाला मेथड है वो हम कॉल करेंगे, और इसको ये ऑब्जेक्ट्स पास करेंगे, जैसे मैंने पास किया डॉग, देन अगेन मेक साउंड कैट। ठीक है, तो ये क्या करेगा, जब मैं मेक साउंड मेथड कॉल करती हूँ, आई एम पासिंग डॉग, तो ये क्या करेगा, डॉग डॉट साउंड मेथड कॉल करेगा। जब भी मैं कैट भेजती हूँ तो ये कैट डॉट साउंड मेथड कॉल करेगा। ठीक है, और अगर हम, ठीक है, इतना हम एग्जीक्यूट करके देखते हैं, तो इसका आउटपुट क्या आएगा, डॉग के साउंड में जो लिखा है वो पहले आएगा, फिर कैट के साउंड में जो लिखा है वो उसके बाद आएगा। ठीक है, we'll just execute this। अच्छा, ठीक है, तो ये बार्क एंड देन मियाओ, गॉट इट। नाउ अगर मैं डॉग पे स्लीप मेथड कॉल करती हूँ तो इट विल गिव मी दिस एनिमल इज स्लीपिंग। वैसे ही हम कॉल कर सकते हैं कैट के ऑब्जेक्ट के ऊपर स्लीप मेथड। सो दिस इज हाउ वी गेट द आउटपुट। तो यहाँ पे आपको समझना क्या है, वी हैव यूज्ड एब्स्ट्रैक्शन। So for abstraction purpose, we have defined an abstract class. Inside abstract class, we have defined abstract method. According to our requirement, we are overriding and we are writing its implementation in the derived classes. ठीक है, और उसके बाद हमने ये एक फंक्शन लिखा। ओके, और उस फंक्शन को हम जो भी ऑब्जेक्ट सेंड करेंगे अकॉर्डिंग टू दैट इट विल कॉल द मेथड इनसाइड दैट क्लास। समझ में आया, एब्स्ट्रैक्ट मेथड, एब्स्ट्रैक्ट क्लास। Yes, Yes, ma'am. ma'am. ओके, now we'll see demonstration of static methods जो हमने देखे अभी। So I'll create one new file static demo.py। ठीक है, so let's define one class and inside that class we will define some static methods। जैसे मैं क्लास डिफाइन करती हूँ मैथ operations। okay, so inside this class if I want to define some static method के लिए मुझे decorator देना पड़ता है static method at the rate static method, this is called as decorator।
Now def, let's say first function is add, it will take two parameters x comma y और ये रिटर्न करेगा x प्लस, ठीक है। वैसे ही हम और एक स्टैटिक मेथड डिफाइन कर सकते हैं, subtract def subtract, again it will take two parameters and return x minus y, okay. Like this you can define multiplication, division inside this, okay. Now how to use this, that is important, okay. Usually जो भी class में हम method define करते हैं उसको हम access करते हैं using objects, but these methods are static, you cannot use it with object, you have to use, you can directly use it using class name, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा class name है math operation, तो you can directly call add method math operation dot add, ठीक है। अगर आप इसका ऑब्जेक्ट बनाओगे जैसे मैथ ऑपरेशन एमओ, सॉरी, एमओ इज इक्वल टू math operations, if you create object and if you try to access this method, okay, add, और यहाँ पे हम लेंगे 2,4, इसको प्रिंट में, ओके। लेट अस ट्राई कि क्या होता है। So we can use it with object as well, but now let us check if we are able to use it with class name or not. So basically we define static method when we want to work that method in isolation. Math operations dot add, अगर हम करते हैं 10, 20 तो हमें आउटपुट आता है या नहीं वो चेक करते हैं, ठीक है। So it is also giving us output. So here we can say that you can use these methods along with objects, but when you, the purpose behind defining static method is you want to use it with class, ठीक है। तो अगर static method है तो हम usually ऐसे ही use करते हैं with class name, so without creating object of class you can use them, that is the purpose, got it। ऐसे ही हम Yes, ma'am. subtract भी कॉल कर सकते हैं, 20, 10, so it is giving 10, this is how we can create static methods in Python, okay। And then we'll see how to define or how to overload the operators, okay। For that again we'll create one new file, operator l.py, okay। So you can change default behavior of the operator, जैसे हमने वो पॉइंट का एग्जांपल देखा, ठीक है। सेम एग्जांपल we will try here. So first let's define that class point, okay। Inside that class first we'll define a constructor, that is init method, which initializes the constructor, self, then we want two coordinates for points x and y, okay। Then self dot x, self dot x equal to x,
and self dot y equal to y. Okay, now we want to overload the plus operator. Okay, so if you want to overload plus operator, okay, I'll write here overload plus operator. So if you want to overload plus operator, you have to define a magic method, that is add. Inside add, first parameter will be self and then some other point. Okay, other refers to some other point, and here we will return. क्या रिटर्न करना है हमें? पॉइंट का एक ऑब्जेक्ट रिटर्न करना है विथ टू कोऑर्डिनेट्स. तो टू कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? सेल्फ डॉट एक्स प्लस अदर डॉट एक्स कॉमा self dot y plus other dot y. This is how we are changing behavior of plus operator. वैसे ही आप subtract का भी कर सकते हैं, तो you can try it by your own. subtract, multiply और भी कर सकते हैं आप. जो भी डिफॉल्ट हमारे ऑपरेटर्स होते हैं, जैसे प्लस, माइनस, स्टार, स्लैश, असाइनमेंट ऑपरेटर, लेस देन, ग्रेटर देन, ये सारे ऑपरेटर्स आप ओवरलोड करके देख सकते हैं. ठीक है, तो अभी तो हम यहाँ एक तो एडिशन और दूसरा str ओवरलोड करेंगे. ठीक है, str सेल्फ, ये str हम डिफाइन कर रहे हैं जस्ट टू फॉर्मेट अवर आउटपुट. ओके, तो ये str रिटर्न करेगा कुछ फॉर्मेटेड स्ट्रिंग लाइक f. इसको हम देंगे सेल्फ डॉट एक्स कॉमा सेल्फ डॉट एक्स कॉमा सेल्फ डॉट वाई. राइट, ये हो गया हमारा फॉर्मेटेड आउटपुट. तो जैसे ही आप स्ट्रिंग प्रिंट करोगे या पॉइंट प्रिंट करोगे, तो वो आपको इस फॉर्मेट में उसका आउटपुट देगा. सो लेट अस ट्राई दिस. सो फर्स्ट क्रिएट ऑब्जेक्ट ऑफ दिस पॉइंट क्लास. ओके, वी नीड टू गिव टू कोऑर्डिनेट्स टू दिस. जैसे हम देते हैं 2, 3. then again create one more point. p2 is equal to point 4, 5. Okay, then let's take p3 is equal to p1 प्लस p2. तो ये क्या कर देगा? ये जो कोऑर्डिनेट्स है इनका एडिशन दे देगा. राइट, और अगर मैं करती हूँ प्रिंट, डायरेक्टली आई एम पासिंग p3, तो ये क्या करेगा? दिस प्रिंट p3 will call this str method and will print your point in this way. ओके, सो हम चेक करते हैं क्या होता है इसका. सो हियर यू कैन सी एडिशन हो गया इनका 6 and 8. एंड देन उसको प्रिंट कैसे किया? पॉइंट इन ब्रैकेट 6, 8. वाई इट हैज प्रिंटेड लाइक दैट? यहाँ पे प्रिंट में तो हमने कुछ भी नहीं लिखा है पॉइंट ऐसा. राइट, लेकिन क्यों आया उसका आउटपुट? क्योंकि उसने ये str मेथड कॉल किया. इसमें हमने ऐसे लिखा है पॉइंट एंड x, y इन राउंड ब्रैकेट. तो वैसे ही हमारा आउटपुट प्रिंट हुआ. गॉट इट? हाउ टू ओवरलोड द ऑपरेटर्स? Yes, ma'am. Got it, ma'am. ओके, फाइन.
ठीक है, हमने और क्या देखा था इसमें? एब्स्ट्रैक्शन, स्टैटिक मेथड्स, बाउंड इनबाउंड एंड ऑपरेटर ओवरलोडिंग, राइट? तो हम एक पूरा एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे ऑन दिस टॉपिक. जस्ट वेट, आई हैव दैट एक्सरसाइज. ठीक है, ये जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का है, ऑन दैट विल सॉल्व एंटायर एक्सरसाइज. तो आपको ये सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे. ठीक है, तो आज हम स्टार्ट करते हैं. आई थिंक ये कंप्लीट नहीं होगा आज, तो हम कंटिन्यू करेंगे कल. ठीक है, so this is assignment Yes, on ma'am. object oriented programming in Python. So here we are going to create a library management system using classes, objects and all the important concepts in object oriented programming. We are going to create this library management system. Yes, ma'am. Just wait for a second. Okay, so what we have to do in this library management system, first you have to define some classes with some attributes and methods. So create a class book with attributes and methods. Okay, तो मैं क्या करती हूँ, ठीक है. तो बुक क्लास में हमें एट्रीब्यूट्स चाहिए, टाइटल, ऑथर, ISBN and availability. So all are in string, only availability is boolean and availability का default value है true. Okay, so let us define a class. Unit 3 OOP.py. Okay, so we'll define here class book. Okay, क्या करना है अभी क्लास के अंदर? कैन एनीवन टेल? जब भी हम क्लास डिफाइन करते हैं तो क्लास के अंदर सबसे पहले क्या करेंगे? यस, Define क्या डिफाइन करेंगे? methods. क्या? init method, right? So def Init method definition. init. ओके, init में हमें क्या चाहिए? सेल्फ, उसके बाद टाइटल, राइट, ऑथर, स्ट्रिंग, ISBN. ISBN. ओके, और एक चाहिए हमें अवेलेबिलिटी, लेकिन उसका डिफॉल्ट वैल्यू है ट्रू, तो हम पास Available. नहीं करेंगे, इसलिए हम इसके अंदर डिफाइन करते हैं. ठीक है, तो सेल्फ डॉट title is equal to title, then self dot author is equal to author, then self dot ISBN is equal to ISBN, and then self dot availability equal to true करना है. ठीक है, तो ये हो गया हमारा बुक क्लास विथ दिस एट्रीब्यूट्स. देन नेक्स्ट क्या करना है हमें? वी हैव टू डिफाइन methods to borrow the book, return the book and display details of the book. ओके, तो ये तीन मेथड्स हम इस क्लास के अंदर डिफाइन करेंगे.
first method def borrow, Both. again first parameter as it is inside the class, तो आपको एक पैरामीटर फर्स्ट तो देना पड़ेगा सेल्फ। ओके, बोरो के अंदर हम पहले तो क्या चेक करेंगे, बोरो मतलब आपको लाइब्रेरी से कुछ बुक लेना है, कोई बुक लेना है, राइट। तो लेने से पहले अवेलेबिलिटी चेक होता है, राइट। तो हम चेक करेंगे कि इफ सेल्फ डॉट अवेलेबिलिटी, अगर सेल्फ डॉट अवेलेबिलिटी है मतलब सेल्फ डॉट अवेलेबिलिटी इक्वल टू ट्रू, ठीक है। तो ये अगर इक्वल टू ट्रू नहीं भी लिखा तो भी चलता है। तो ये बाय डिफॉल्ट सेल्फ डॉट अवेलेबिलिटी का जो वैल्यू है वो रिटर्न करेगा। अगर ये ट्रू है तो क्या करना है, बुक विल बी बोरोड, तो इसका अवेलेबिलिटी फॉल्स हो जाएगा। और हम एक मैसेज प्रिंट करेंगे कि द बुक, और यहाँ पे बुक का टाइटल भी देंगे हम, द बुक सेल्फ डॉट टाइटल, ये जो टाइटल वाला बुक है, हैज बीन बोरोड। ओके, एल्स क्या करेंगे, एल्स वी विल प्रिंट द बुक इज नॉट अवेलेबल, ठीक है ना। अगर ट्रू है तो हम उसकी अवेलेबिलिटी फॉल्स कर देंगे, और हम ये मैसेज प्रिंट कर देंगे कि ये बुक बोरो हो गया। अदरवाइज हम प्रिंट करेंगे द बुक सेल्फ डॉट टाइटल इज नॉट अवेलेबल। समझ में आया बोरो फंक्शन में क्या किया? Yes, ma'am. ओके, वैसे ही और कौन सा फंक्शन हमें डिफाइन करना है, रिटर्न बुक, ठीक है। तो अभी आप बताओ Def रिटर्न रिटर्न कैसे करेंगे, डेफ रिटर्न def return bracket self. अगेन सेल्फ, राइट। क्या करना है, जब रिटर्न करते हैं तो अवेलेबिलिटी क्या हो जाएगा, False. False comment. रिटर्न करते हैं तो अवेलेबिलिटी फॉल्स कैसे होगी, अगर ट्रू आपने होगा मैम, हाँ कुछ बुक वहाँ लिया, अवेलेबल हो जाएगा बुक। हाँ ऐसे मान लो कि हमारे लाइब्रेरी में एक ही बुक है अभी के लिए, तो अगर वो बुक आपने बोरो कर लिया तो उसकी अवेलेबिलिटी फॉल्स हो जाएगी। जब वो बुक आप रिटर्न कर दोगे तो उसकी अवेलेबिलिटी क्या हो जाएगी, ट्रू हो जाएगी। तो रिटर्न में हम क्या करेंगे, अवेलेबिलिटी इज इक्वल टू ट्रू, ट्रू और मैसेज प्रिंट करेंगे कि ये बुक अवेलेबल रिटर्न हो गया, रिटर्न हो गया। राइट। तो क्या प्रिंट करेंगे, एफ Yes, ma'am. द बुक सेल्फ डॉट टाइटल सॉरी टाइटल Self dot. हैज बीन और रिटर्न। रिटर्न। आया समझ में रिटर्न? यस मैम। Yes, वैसे ma'am. ही हमें और कौन सा फंक्शन चाहिए यहाँ पे, डिस्प्ले डिटेल्स। तो जो भी बुक, अगर हम कुछ बुक क्रिएट करते हैं और डिस्प्ले डिटेल्स फंक्शन कॉल करेंगे, वेल फॉर्मेटेड मैनर में हमें उसके डिटेल्स दिखने चाहिए, ठीक है। तो इसके लिए हम एक फंक्शन डिफाइन करेंगे, डिस्प्ले डिटेल्स अगेन सेल्फ। ओके, तो इसके अंदर सिर्फ प्रिंट एक ही स्टेटमेंट होगा, लेकिन उसमें हम गुड फॉर्मेटिंग में वी विल गिव द मैसेज, जैसे टाइटल सेल्फ डॉट टाइटल, बुक की जो भी डिटेल्स है वो सारी डिटेल्स हम यहाँ पे डिस्प्ले करेंगे। ऑथर सेल्फ डॉट ऑथर, देन ISBN
ISBN self dot ISBN और लास्ट है हमारे पास अवेलेबिलिटी अवेलेबिलिटी self dot availability। ठीक है, इतने ही चाहिए थे ना हमें फंक्शंस बोरो रिटर्न एंड डिस्प्ले। ओके, तो आज हमारा टाइम हो रहा है, तो हम सिर्फ एक क्लास का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करके ये फंक्शन कॉल करके देखेंगे। ओके, तो कैसे क्लास क्रिएट करेंगे? जैसे मुझे एक क्लास क्रिएट करना है बुक का, हाउ टू क्रिएट द ऑब्जेक्ट? मैम bn equal to ओके, ऑब्जेक्ट नेम जैसे बुक वन and class इज इक्वल टू क्लास ऑब्जेक्ट नेम, नेम इज इक्वल क्लास नेम, और इसके अंदर हम क्या देंगे? self टाइटल, ऑथर एंड ISBN, राइट? तो कोई बुक आपको पता है जो आप बता सकते हो? मैम मैम वी ignited ऑलवेज mind मैम लिंग्विस्टिक क्या? ignited mind the ignited mind मैम Ignited mind, good. Ignited mind is the title, then author is Abdul Kalam, right? yes मैम देन उसका कुछ तो ISBN देंगे हम। ओके, और अवेलेबिलिटी तो बाय डिफॉल्ट हम ट्रू ही दे रहे हैं, जब भी हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे तो उसका अवेलेबिलिटी ट्रू होगा। ठीक है, तो दिस इज हाउ वी हैव क्रिएटेड वन बुक। नाउ बुक वन डॉट डिस्प्ले डिटेल्स करेंगे। ठीक है, लेट अस एग्जीक्यूट दिस। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखोगे तो वेल फॉर्मेटेड आउटपुट हमारा आ गया। टाइटल, ऑथर, ISBN एंड अवेलेबिलिटी क्या आ गया? ट्रू। ओके, नाउ क्या करेंगे हम? बुक वन डॉट बोरो एंड अगेन बुक वन डॉट मैम डिस्प्ले नहीं आ रहा आ गया ना डिस्प्ले। मैम आ रहा है। ये क्या यहाँ पे जो मैं ये जो आया है इंफॉर्मेशन बुक का, ये डिस्प्ले डिटेल से ही आया है ना। डिस्प्ले डिटेल्स में ही तो हमने लिखा है वो। ठीक है, यस मैम। हम बोरो करते हैं, उसके बाद फिर से हमने डिस्प्ले डिटेल किया। ठीक है, तो क्या क्या आ गया? पहले तो उसके डिटेल्स डिस्प्ले हो गए, उसके बाद मैसेज आया द बुक इग्नाइटेड माइंड हैज बीन बोरोड, और उसके बाद जब डिस्प्ले डिटेल किया तो अवेलेबिलिटी क्या हो गया? फॉल्स, राइट? यस मैम। नाउ वी विल रिटर्न द बुक, shall call book one dot return book, अगेन डिस्प्ले डिटेल्स करें। ठीक है, तो पहले डिटेल्स प्रिंट हो गए, फिर बोरो, बोरो के बाद अवेलेबिलिटी फॉल्स, उसके बाद द बुक इग्नाइटेड माइंड हैज बीन रिटर्न, और उसके बाद अवेलेबिलिटी ट्रू। आया समझ में? यस मैम। ओके, so we have finished with this first question.
in this assignment. Tomorrow we'll complete this entire assignment. तो इसमें हम inheritance, polymorphism, abstraction, operator overloading and yes कल सब देखेंगे हम. ठीक है, आज के लिए हम रुकते हैं. थैंक यू. Okay, ma'am. Thank you. Thank you, ma'am. जस्ट 1 मिनट रुको, मुझे स्क्रीनशॉट निकालना. सॉरी, जो जो लोग ज्वाइन थे उनको बता सकते हो ज्वाइन करने के लिए. मैं स्क्रीनशॉट लेना भूल गई थी. यस धनेश. मैम बोल रहा हूँ मैं. हाँ, सिर्फ 2 मिनट के लिए ज्वाइन करने के लिए बोलो तो मैं स्क्रीनशॉट ले लूंगी, नहीं तो उनका अटेंडेंस मिस हो जाएगा. और कोई था? मैम दीपांशु था. अच्छा बोलो तो उसको ज्वाइन करना. ठीक है चलो, उसका अटेंडेंस मार्क कर दूंगी मैं. ओके, थैंक यू.